चलिए बताइए अपने बारे में। So my name is Shantanu Banerjee. I've done my BTech from National Institute of Technology, Arunachal Pradesh, and I've done my schooling from my hometown, Prayagraj only. I have done my project in pool boiling heat transfer. हम्म। हो गया। Yes, sir. आपका वर्क एक्सपीरियंस है एनपीटीआई से? No, sir. I am passed out of 2023 batch from that online preparing for. तो एनपीटीआई में क्या क्या किया आपने? एक मंथ? सर एनपीटीआई में हमारा सर क्या कहते हैं बेसिकली इंटर्नशिप था हम लोग का एनपीटीआई में। और हाँ हाँ। बेसिकली कोरोना टाइम में था हम लोग का ऑनलाइन हो गया था। हम लोग को सर बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया था कि मेंटेनेंस वगैरह का क्या क्या होता है, मेंटेनेंस टाइम वगैरह क्या होता है, बेसिकली किस फ्रिक्वेंसी में हम लोग करते हैं। और ज्यादा सर कुछ बता नहीं पाए थे क्योंकि सर वो इसीलिए कोरोना टाइम में ऑनलाइन हो गया था। नहीं तो मेंटेनेंस में आपने क्या सीखा वहां पे? कुछ तो सीखा होगा ना? सर उन्होंने यही बताया था कि सर हम लोग बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी में करते हैं कुछ। हम लोग एक एक हफ्ते में टेस्टिंग करते हैं कि हमारे सारे मोटर्स वगैरह सही से काम करते हैं कि नहीं। फिर हम लोग उसी को एक एक महीने में भी करते हैं और एक एक, एक साल में भी करते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री टाइम डोमेन्स ऑफ डूइंग द मेंटेनेंस इन देयर। एंड देन सर हम लोग को ओवरऑल स्टीम मतलब स्टीम पावर प्लांट के बारे में बताया जा रहा था कि और क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बता सकते हैं आप? एक लेआउट सर कंप्लीट बना बेसिकली सकते हो आप? यस सर, यस सर। बना के दिखाइए। So I have drawn a simple block diagram basically. A simple block diagram like there is boiler, then there is turbine which expands the gas and basically changes its enthalpy into the work. हम्म। Then it goes to a condenser, and then it is again it goes to pump where we actually put in some amount of work input, and then it is like uh, not pump, compressor there. If we are talking about the steam turbines and all, like Brayton cycle, and then it goes to boiler. और इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होते उसमें? सर और भी मतलब मैंने जस्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम को और भी होते हैं, फ्लैश चैम्बर रहते हैं सर, फ्लैश चैम्बर रहता है। और और चीज़ है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है? सर हम लोगों ने सर पूल बॉलिंग हीट ट्रांसफर पे किया था सर। हम लोगों ने पूल हम्म। बॉलिंग वहां पे सर हम लोग बेसिकली एक सैंपल में ट्राई कर रहे थे कि उसका हीट फ्लक्स हम कम से कम वॉल सुपर हीट में हम उसका हीट फ्लक्स अटेन कर सके, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी में क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहते हैं। हम लोग चाहते थे कि मतलब जल्दी जल्दी हम लोग जो हीट ट्रांसफर है बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस हम कर सके बेसिकली। एंड द बेस्ट वे पॉसिबल इज boiling, and in that too also we were trying to how to enhance that boiling. ये तो उसमें आपने किया क्या एक्चुअल में, इस पूल बॉइलिंग हीट ट्रांसफर में? हेलो सर। साउंड आ रही है? हाँ सर। इसमें आपने किया क्या, हाँ सर। बेसिकली हाँ सर। किया क्या है इसमें? सर बेसिकली हम लोगों ने एक सैंपल लिया था, कॉपर का सैंपल लिया था हम लोग, उसमें मॉर्फोलॉजी मतलब उसके सैंपल के सरफेस में सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। होल्ड ऑन।
Is it audible? हाँ सर, अब ऑडिबल है सर। Now continue. तो सर हम लोगों ने बेसिकली सर कॉपर के बेयर कॉपर सरफेस पे हम लोग सरफेस मॉर्फोलॉजी करने की ट्राई कर रहे थे कि जिससे हम लोग ये कर सकें। तो अगर मैं अपने पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो सर हम लोगों ने उसमें पहले इचिंग किया, उसके बाद हम लोगों ने उस पे कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन का लेयर का कोटिंग करने की कोशिश की, ताकि क्योंकि एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है कि पोल बॉलिंग में जो डायनेमिक्स होता है उसमें ये अक्सर देखा गया है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सरफेस में बॉइलिंग हीट ट्रांसफर इंक्रीज करता है। तो सीएनटी और क्या कहते हैं ग्राफीन एक हाईली हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको चूज करके उसका कोटिंग किया कॉपर। ओके, आपने प्रोजेक्ट में दो तीन प्रोजेक्ट मेंशन किया है, एक रोड सेफ्टी सिस्टम है, इसके बारे में बता ये सकते हैं सर कुछ? वो माइनर, हाँ सर वो एक एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट ईयर में माइनर प्रोजेक्ट था सर। हम लोगों ने उसमें सिंपली पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करके बेसिकली if some car is approaching or running on a road and in a blindfold turn, basically that piezoelectric sensor can detect that any car is coming or not, and with that we can signal a traffic light that there is some car. Like in hilly areas there are very sharp turns where we can, where visibility is a very big issue, हम्म। and there we can use this, there we can use this piezoelectric sensor. ओके, ओके शांतनु, इट्स डन फ्रॉम माय Yes, sir. साइड। नाउ इट्स टाइम फॉर टेक्निकल। सर कंटिन्यू। Santanu, what are your favorite subjects? Sir, my favorite subjects are heat transfer and fluid and thermal. Any more? Strength of material, sir. Strength of material. You don't like production? Sir, my favorite topics are these only. It's not like that I don't like production, but favorite topics are. Okay. So can we talk on production? Yes, sir. Okay. Can you classify the casting defects? Sir, there are various casting defects like misrun, cold shut, and rat tail defects, and I'm currently can recall only these things, sir. Usually. Okay. What is basically casting? Casting is basically a process in which we have a molten metal, and we give it shape by putting it into a mold, which is having a like shape of what we exactly want. Like that mold is created by a pattern, and we pour molten metal over that to So create yeah, ourselves. so can we are unable to manufacture with the help of forging? Sir, both have some pros and cons. In forging, we can use like various things we create by forging, and the various things we create by casting. Like if we get into if I get into very deep, like in like turbine blades, they cannot be created by forgings because we want a very single grain structured, uh, mm, single grain structured. What do you say? Like material, and that's why we have to use casting. We cannot use forging there. You can use Both any main language, in which language you are comfort. Language is not barrier, okay? So you can use English as well as Hindi both. Okay. So you are not thinking that if we will manufacture the turbine blade with the help of casting, so strength of blade will be weak. सर बट हम लोग क्या करते हैं ना फोर्जिंग में, सॉरी कास्टिंग में स्पेशल टाइप का कास्टिंग, ब्रिज ब्रिजमैन ब्रिज कास्टिंग कहते हैं, ब्रिजमैन कास्टिंग कहते हैं। उसमें सर हम लोग को सिंगल सिंगल ग्रेन, एकदम सिंगल ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हम लोग को टरबाइन चाहिए होता है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है सिंगल क्रिस्टल में। सर वो कास्टिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर फोर्जिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें एक मेटल को बेसिकली फोर्सफुली हम उसको एक शेप दे रहे हैं, बट हम उसके इनसाइड ग्रेन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली उतना ज्यादा मॉर्फ नहीं कर सकते जितना हम कास्टिंग में कर सकते हैं। अच्छा, टरबाइन ब्लेड्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं?
Sorry, sir, I'm not. कोई बात नहीं। आप मुझे मर्चेंट सर्कल एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? So merchant circle of like cutting. Basically. हाँ हाँ। And then go. या ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। So exactly, I'm drawing with mouse. So basically, नो, ड्रॉ ऑन will not पेपर be ओनली। very good. You don't have paper pen? Yeah, I don't. Yeah. Okay, draw on that. So basically, this is merchant circle. Circle is not like clear at all due to light Okay. condition, but basically this is merchant circle. Here, majorly we are like all the forces like shear, shear normal, friction, friction shear, then cutting force and tangential force are drawn basically. And Shantanu, with this, we, yes, sir. what is beta? So beta is the friction angle, frictional like friction angle between the which is acting. Okay. So, Tan beta equals to yes, okay, suppose we are doing cutting with the tool, single point cutting tool. So, yes, sir. now built up is going to generate. Built up Yes, sir. is going to produce. So, what is the merits and what are the demerits of built up edge? So the major demerit of built-up edge is that it will blunt the edge. It will blunt the edge. It will create uh, like we have to exert more force for cutting, and if in a limited in a limited VLU built-up edge, basically uh, there will be smooth cutting, but after that it will create the adverse conditions for So, how cutting. you can remove built up edge? Using coolants, using coolants like and using the uh, perfect material for cutting, for perfect material for cutting, like which because value also depends upon the type of workpiece and the tool which we are taking. We have to consider that fact while choosing the material. Okay, Santanu. Your project was on almost all related to heat transfer. Yes, sir, yes, sir. So, can you explain the types of boiling with the help of graph? Uh, so like you are Complete, like complete in the whole boiling with the help of graph. So this is a pool boiling graph in which we have done our project. Basically, this is showing the Q, which is given as we were using some transducers for uh, uh,
giving current and which was heating a copper element. And this is delta Txs. Basically, it was the difference between the fluid temperature and our sample temperature. And yes, we are now getting into like the domains, how the boiling starts. Like, firstly, there is natural convection for some amount of temperature difference, like mostly 0 to 10-degree difference. There is a natural convection. After that, there comes nucleate boiling, and then there comes transition boiling phase. There comes and at the last tip of the transition boiling, there comes the Linda-Foss point where our Q is very minimum, and then finally we get into thick boiling, thick Technically, film boiling. no doubt. Technically, can you explain the difference between convection heat transfer and free convection and forced convection? Apart from that, that Sir, is freely, that is forcefully. Apart from that, can you explain that? if we get into uh, into a dimensional number, then Grashof by RE square, if it is less, then it will be a free convection. If it is more, then it will be a forced convection. How you can say that, mathematically or experimentally? So, experimentally, sir, experimentally, it is Who like did that experiment? no idea, sir. So are you sure that your result is correct? Are you confused? Lots of so the ratio of Grashoff's and RE Reynolds square should be great. If it is more, then it will be a free convection. Basically, the Grashoff number correspond to free, and Reynolds number correspond to forced. Yeah, Grashof number is related to free convection. So that is not related with forced convection. So how you can going to relate that to free convection and forced convection with a single number, that is Grashof number? No, sir. There is ratio of RE square also. The denominator is RE square, no, sir. R is The Reynolds ratio number. between Grashof, yes, sir. The ratio of Grashoff's and RE square. If Grashoff's basically, What let the us take like Grashoff's is. what that term is, the what that ratio is named? Is there any specific name? Sir, I don't know. Okay, leave that. Can you draw the TBL profile? Thermodynamic boundary layer. Thermal boundary layer profile. Yes, sir. Okay, can For please what draw, case? please? For, For for general, what case? for general case. If we are taking horizontal, then and the plate is at higher temperature. If we are talking about horizontal plate, then this is Okay, the okay, okay, plate okay. which is Leave at that, high leave the temperature. Shantanu. Now I'm going to heat the water. Okay, Now sir. I'm going to heat the fluid. Whatever fluid is there, I'm going to Okay, heat rapidly. So is there any change okay, sir. on thermal boundary profile? Uh, so, a few questions. Boiling is taking place or not, sir? Boiling is taking place or not? That is not defined. That is not defined. Basically, I'm going to heat rapidly. That fluid was only means whatever TBL is drawn now. So that is under fluid and temperature.
So now I'm going to heat the fluid rapidly. So with time it will change. With time it will change basically because the fluid will tend to like suppose the plate is at some degree Celsius and the fluid is at some degree Celsius. Now we are heating. Now the when we are constantly heating, the plate temperature will also increase and the fluid temperature will also increase. So basically, with time, the profile will become like change. So TBL will increase or decrease? Thickness of TBL will increase or decrease? It will decrease, sir. That will It decrease. will decrease. Sure. So like sir, we are constantly heating. What I'm like trying to say that we are constantly heating. Like suppose the plate is like this and the fluid just above that is also heating. We are heating and heating and heating. The time will come that this liquid will be at the same temperature with the plate. Ultimately, if we are constantly heating, if we are taking a long time, then this will be at same temperature with this. So basically, there will be no temperature difference, and there is if there is no temperature between the T infinity and T plate. So I think like that. That's why the thermodynamic boundary layer will decrease. Okay, leave that topic. Now I'm asking general question. You are having a football, Yes, okay? yes, sir. I'm going to fill the air inside the football at room temperature Okay, sir. and certain pressure, that is P1, P2, P3, whatever you want, you can have. Okay. Now I'm Yes, sir. going to leave Yes, sir. that football in room for 2 days. Okay, sir. Okay, sir. So can you draw the graph between mass and temperature? Sir, like football is sealed, so that's why I think mass will not change. Okay, If mass will not football change. is sealed, So can we say that if we will leave that football for infinite time, so mass will remain same, football will remain that same. There's no need to fill the air again. sir, if we are talking about infinite time, then there. Okay, leave that question. Now I'm just going to change the question. Football is going to burst. Okay. Can you draw PV diagram? Football is- So this is a highly irreversible process, and drawing a irreversible process in a PV diagram, you It's cannot not draw. possible. Okay, So bursting the this is a tire is the very example. highly. But in a standard book, it is written that I think the bursting of tire is the example of adiabatic process. Sir, it like we can say it is adiabatic, but whether it is reversible or irreversible, it is whether it is irreversible or reversible, it is the main like we can uh, surely say it is adiabatic because there is no it is happening at like a minute time. There is no taking place of heat transfer, but it will not be a reversible process. And drawing a irreversible process in PV diagram It's not possible. is not possible. Can Like you in fact, can even you when draw we are yes, leave that? Can you draw actual auto cycle on PV diagram? yes,
So it is something like that. Which process is reversible in this cycle? Sir, the heat addition, That is that compression, and then heat addition and if you are drawing expansion. a reversible process, so can you say that it is actual cycle? Actually reversible process is possible. I told that draw actual cycle, and you are telling that heat addition is reversible process. So is it possible that in actual cycle Sir, any reversible? when we are taking auto cycle, we are like firstly we are talking about the theoretical auto cycle. No, In no, the case of theoretical, no, no, no. no, sir, I'm just Okay, you want to justify sir, your answer. Okay. yes, sir. In the theoretical auto cycle, what we are saying, the heat addition is a reversible heat addition. It is a reversible heat addition at a constant volume. Then, when we are going to draw the actual auto cycle, what we do is that we interpolate that graph. We interpolate that graph with the real life situation, and then we get our actual auto cycle. We cannot there is no way, sir, we can draw irreversible. Like how can I justify, like in even in the Rankine cycle, in the case of Rankine cycle also, when we are trying to draw the throttling process, we make a dash line for the throttling process because we don't know exactly whether it is because in that case also the throttling process is assumed to be an adiabatic throttling process, but we cannot draw PV graph, PV raised to power gamma, because it is a irreversible process. Why we are drawing breaking line in irreversible cycle? What So is the because logic behind that? we are trying to showing that it is a irreversible. It is irreversible. We don't know exactly which path is it taking. No, so why we are drawing with dotted line? Sir, it is a convention that if we are drawing a solid line, it is showing irreversible, and if it is dashed, Why that convention is why only dotted line? Means if convention is there, so we can draw with light hand. For reversible, we will use dark hand, and for irreversible, we will use light hand only. So why dotted only? yes, sir. All books are writing that only. Yes, sir. Irreversible process with dotted line, and you didn't see any dotted line here in actual cycle. No, sir, I don't know why we are showing with the dotted. Okay, not an issue. Sir, continue, please. क्या शांतनु स्टील पावर प्लांट किस साइकिल को वर्क करता है? What, sir? स्टीम पावर प्लांट किस साइकिल को वर्क करता है? Steam power plants are Rankine cycle पे, Rankine cycle. उसका टीएस डायग्राम बना सकते हो आप? Yes, sir. So here it is, like हाँ, this is explain कर. condenser, this is. Should I like? हाँ हाँ. Okay.
So this is condenser, this is turbine, this is about uh, boiler, and this is pump, and this is TS diagram for the Rankine cycle. वो जो डोम ऊपर की तरफ बनाया है उसके बारे में बताओ। ये जो सर डोम, हाँ हाँ। सर ये डोम बेसिकली हम लोग लोकाई है सर, बिटवीन दी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये ओके, एक्सपेरिमेंटली सर हम लोगों ने निकाला है। कैन यू ड्रॉ पीएच डायग्राम? डिफरेंट पीएच डायग्राम। पीएच, या पीएच डायग्राम का डोम सर हमने कभी मतलब पढ़ा नहीं है, इसलिए हम डोम बना नहीं पा रहे। पीएच अच्छा, डायग्राम उसी का डोम उसी टीएस डायग्राम में अगर रीहीटिंग इंक्लूड कर दे तो क्या चेंजेस आएंगे? सर वर्क ऑफ द टरबाइन विल इंक्रीज बेसिकली if we are doing perfect reheating and mm, let I'm sure हो गया। I'm just drawing like this sir, here this is reheating basically this, रीहीटिंग का बेसिकली पर्पस क्या है? सर रीहीटिंग का बेसिकली हम लोग एक्सेस मतलब एक तो सर हम लोग मीन ऑफ हीट एडिशन हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वर्क आउटपुट भी हम लोग इससे ज्यादा ओके, अगर रीजनरेशन इंक्लूड करें तो क्या चेंजेस आएंगे उसमें? रीजनरेशन करने से। ओके सो शांतनु, बेसिकली सर, हाँ ड्रॉ करना चाह रहे हैं? हाँ सर बेसिकली इसमें सर हम लोग का जो टरबाइन के एग्जिट में जो एक्स्ट्रा हीट एंथैल्पी रहेगा, हम उसको ट्रांसफर करेंगे बॉयलर के स्टार्टिंग में बेसिकली इसमें, ठीक है और ठीक इसमें है, लिव इट लिव इट लिव इट। नाउ इट्स डन फ्रॉम आवर साइड, नाउ इट्स डन फॉर योर फीडबैक कि आपका कैसा रहा, अब वो बताने वाले। ध्यान से इसको सुनिएगा। एक्चुअल में देखिए, मॉक आप जो लेते हो ना, मॉक जो आप अटेंड कर रहे हो, एक्चुअल में अटेंड करने का पीछे बेसिकली पर्पस क्या है, आप उस चीज को सुधारो, है ना? तो जो बातें हाँ बताई जा सर, रही है उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो, ये सबसे हाँ बड़ी सर, गलती है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट है यस सर, आपका हैंड मूवमेंट, हमने नोटिस किया कि प्रॉपर नहीं है। जब आप सामने पैनल मेंबर को समझा रहे हो तो आप उंगली रिप्रेजेंट ऐसे ऐसे करके समझा रहे हो, इट इज नॉट अ गुड मैनर, है ना? इस चीज को आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तीसरा, आप जो बैठे हो तो प्रॉपर ढंग से नहीं बैठ रहे हो, आप ऐसे बैठ रहे हो, ऐसे बैठ रहे हो, है ना? ये गेस्चर आपका गलत झलकाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज, अगर पूरी पूरी बात करूं, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो करते हो कि सामने वाले को लगे कि आप थोड़ा एटीट्यूड में हो, एक लिटल सी बात समझना मेरी, कि अगर आप मेरे पास बैठे हो, मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये झलका कि आप थोड़े एटीट्यूड में हो, तो मैं फिर आपका आधा घंटा 45 मिनट इंटरव्यू क्यों लूँ? मैं वहीं जज करके आपको 10-15 मिनट के इंटरव्यू से बाहर कर सकता हूँ, है ना? यस, ऑथोरिटी मेरे पास है। तो ये बॉडी हाँ लैंग्वेज नंबर डिसाइड नहीं करता कि आपको कितने नंबर मिलने वाले, लेकिन ये डिसाइड करता है कि पैनल मेंबर आपसे खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
एक्चुअली में प्रॉपर पूरा होता है टीआई, टेक्निकल इंटरव्यू होता है। बाकी आपका एचआर का कोई भी रोल नहीं होता, 1% भी रोल नहीं होता है। बट ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर डेवलप नहीं करोगे, अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं करोगे, तो रिप्रेजेंट करने में आप गलत रिप्रेजेंट करने लगोगे। ठीक है। और जब गलत सही चीजें भी बता रहे हो तो सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा। ठीक है। बताने का ढंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। आपको आता है, आपके पास नॉलेज है, इट्स गुड थिंग। बट इसके अलावा आप जो बता रहे हो, बताने का जो तरीका है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अगर यही गलत है तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर इस चीज को आप रेक्टिफाई करके नेक्स्ट मॉक में अगर इस चीज को रेक्टिफाई कर लेते हो तो अच्छी बात है। बात बाकी आपका टेक्निकल कैसा रहा ओवरऑल, वो सर आपको बता देंगे। ठीक है। शांतनु देखिए, जहां तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात है तो हाँ सर। आपका टेक्निकल सही है, लेकिन हाँ आपसे सर। थ्योरेटिकल तो पूछेगा नहीं सर। आपसे ग्राफिकल हाँ डेरिवेशंस, जैसे कि आज हम ग्राफ पे रहे, हो सकता है नेक्स्ट मॉक में हम डेरिवेशन पे जाएं, न्यूमेरिकल्स पे जाएं। ठीक है। तो यस। ग्राफिकल पोर्शन आपका थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। प्लस तीसरा चीज, आप कभी कभी ब्लफ भी कर देते हैं, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं। अब जैसे मान लो सपोज किसी ने पूछा आपसे कि पूल बॉइलिंग आपको एक्सप्लेन, जब डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको न्यूक्लियेट बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग, पूल बॉइलिंग सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था। वो खुद बोल देते कि स्टॉप कर दीजिए आप। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो आपको ग्राफ नहीं पता है उसमें आप बोल सकते हैं कि सर नहीं पता है, अभी गेस कर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो सर ने आपसे बोला कि भाई डोम का नेचर वैसा क्यों है, तो आपने बोला एक्सपेरिमेंटली है। सो हाउ दैट एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको वो बताना था। सर वो, अच्छा, हाँ, वो तो वो डोम अगर पता कैसे बना है तो वो बताना है। अगर आपको मतलब मान कांस्टेंट प्रेशर से हम लोग। हाँ। अब नहीं बताइए, वो उस टाइम बताना था, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि वो आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो फिर आप क्वेश्चंस रिवर्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जो नंबर आपके पास होगा ना उस पर कर दीजिएगा, हाँ आपको सर। आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको ब्लफ नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे कि जो क्वेश्चन हाँ आता है परफेक्टली वो जवाब दीजिए, जो नहीं आता है उसमें अगर आपको लगता है सस्पिशन है, 60-40, 70-30 ये रेशियो है, अब मान लो कि 10% आप श्योर हो सही है तो छोड़ दो। अगर आप 90% श्योर हो तो बोल सकते हो आप सर कैन आई गेस। ठीक है ना, इस टाइप से आप जा सकते हो। क्लियर, बात बाकी सही है। ओवरऑल एवरेज है आपका भी। अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ 100 तो आपका लगभग 55 मार्क्स हम आपको देंगे। ठीक है। 55 मार्क्स हमने आपको इस कारण दिया क्योंकि मॉक है, मेन इंटरव्यू में इससे कम मार्क्स देंगे आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट मॉक में इन सब पे वर्क करके आइएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई